Sessions are already announced, so we have teaching in this week only. Next week is your session week. So except on 1st of March, you have session from Monday to Saturday, right? Yes. Yes, Most sir. likely ours is scheduled on Friday, if I'm not wrong. Ours is scheduled on 4th of March, if I'm not wrong. Uh, Can you confirm or let me confirm? yes, sir. Paper is on 4th of March. 4th of March. So the syllabus for first session test will be Unit 1 and Unit 2. We have completed both the units, Unit 1 and Unit 2. The question paper will be of 30 marks. Okay. And the pattern remains same. I mean, it will be uploaded in Google Class and you have to submit the answer as per the guidelines issued to you every semester. So those who are not present, just inform them. The syllabus for first sessional test is Unit 1 and Unit 2. The question paper will be of 30 marks and there will not be any choice given since it is completely online, so no choice will be given. Okay, it is an open book, open source, like you people are enjoying since last 2 years. So same will continue. Okay. So is it clear? So can you share the PPT which you have PPT shown I'll in? put. I'll put in Google Class. Yes, that's thanks for reminding me. Thank you, sir. That that I'll definitely do that. Maybe today or tomorrow. I'll do that. Okay, so let me start. Share the screen. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes. Okay, so welcome to this course of Programmable Logic Controller EE608 again. And today we are going to start Unit 3. In Unit 1, we discuss about the basic concept of Programmable Logic Controller, why it is needed, what are its components, and how it is, how it functions, and what are the applications mainly. Then in Unit 2, we learned about mainly about PLC diagram in various conditions, how the PLC diagram can be made, and what are the uh, different conditions. Under different conditions, what can be done, like how it reads, how it is scanned. First, it is scanned first rung, then second rung, how the sequence is followed, and what about the connectors, the contactors, if both are having same port address, whether they can be complemented or not. So that's all we studied, in Unit 2, Unit 1 and Unit 2. And in Unit 3, basically we will start, this is the content of Unit 3. Register basics, introduction, general characteristics of registers, module addressing, holding registers, input registers and output registers, PLC timer function, introduction, examples of timer function, industrial application, industrial process timing application, PLC counter functions and introduction, PLC counter with examples. I think this is the lengthiest unit among all the 5 units. So that we will study. And also, I told you that I'll give you the name of the book. Just a minute. Yeah. So this book is not very good, but available in the market. So this you can purchase from the market. This is the book. So this is a PLC logic diagram written by John Webb and Ronald Reyes.
Ronald Rees, published by Pearson, 5th edition. This is the book which I took very little help from this book, but yes, if you want to read, this is a good book to start, and that's the only book I am following. Rest all I am taking from other sources. Maybe I will write the details in the chat box so that others who are not able to see, they can write. Programmable logic controllers, principles and applications. So author is John Webb and Ronald A. Rees, published by Pearson. Yeah. Actually, not much book is available, on this topic because it is very much relevant to industry application. So the companies who have made this PLC hardware, they have published their own application notes and their own documents. So those who are using it, they are getting the complete set of information in terms of documentation and PDF from the company. For example, if you are using Philips PLC, then Philips is providing all the documents, relevant documents in terms of its application, its instructions, letter diagram, everything they are providing. But yes, when it comes to academics, since we are learners in the academics, we are not doing with any in the industry, so we need some books. So this is the best book available as of today. But yes, I'm not following 100% this book, that I'm telling you very frankly. So the content I'm showing in my notes is from various sources. So this book is one of the major source, but not only this, there are various sources. So that needs to be understood, and that is why my lecture notes are more important as compared to these books. So you have to be very very alert in these lecture notes. Okay, so let us. The first topic is register basics. So what is register basics? You have studied in your digital electronics course, and also we discussed in the last week when we took a special class on digital electronics that flip flop is a 1-bit memory cell, right? One flip flop. So if I say, let's say one flip flop, I have, let's say RS flip flop. So I have Q bar. Okay. So this is one flip flop, and it can store 1-bit data at a time, right? So 1-bit data at a time it can store. Okay. Uh, so this can store 1-bit data at a time. Now I need to store more data. Let's say I have a word. So 1 bit is, it's 1-bit data. But when I add, let's say I have a word of 8-bit, I have to store 8-bit data, which you might be studying in macroprocessor book course. Sorry. So then you need more flip flops. So if I need to have 2-bit data, then I need to have 2 flip flops. If I need 3-bit data, I need to have 3 flip flops, and so on. Okay. So 4-bit data, 4 flip flops, and so on. So if I say
the memory size of my PC is 32-bit, or let's say my PLC can store data of 16-bit at a time. So it means there are registers which is having 16-bit connected together, which can hold 16-bit data at a time. Okay, so that is what the registers is. So that's what is written here. To increase the storage capacity in terms of number of bits, we have to use a group of flip-flop. Such a group of flip-flop is known as register. So if I connect this flip-flop either in series or in parallel, so these are called uh, uh, registers. So n-bit register will consist of n number of flip-flop and is capable of storing n-bit word. That's what we discussed just now. अगर 4 बिट का हम कह रहे हैं कि यानी रजिस्टर कहीं भी किसी भी किताब में या किसी भी लिटरेचर में अगर रजिस्टर कहीं डिफाइंड है तो सिर्फ रजिस्टर नहीं लिखा होगा, उसके साथ 4 बिट, 3 बिट, 8 बिट, 10 बिट, 16 बिट जरूर लिखा होगा. Everywhere, wherever you study, the size of the register is mentioned. So it's a 4-bit register, it's a 8-bit register, it's a 16-bit register. So everywhere the bit will be mentioned. So bit is basically the size of that register. So that is how that is how it is capable of storing n-bit word. And again, n is equal to number of flip-flops. So the binary data in the register can be moved within the register from one flip-flop to another. The registers that allow such data transfer are called as shift registers. Now, let's say I have one flip-flop here, two here, three here, four here. Now all these are connected. Then only I can this is, let's say, input and this is output. Okay. So if I say it is 8-bit register, it should be capable of having 8-bit word at a time. But then how this bit is stored in that data, how the data moves from one flip-flop to another flip-flop, that is important. So the process in which the data is moved from one flip-flop to another in a register is called shift register. Means we are shifting the data within register, you know so that is called shift register. So the binary data in the register can be moved within the register from one flip-flop to another. The registers that allow such data transfer are called as shift register. So जहां पर ये डेटा मूव करना अलाउ, एक होता है कि अलाउ ही नहीं है, आई मीन एक दफा डेटा आपने बंद कर दिया उसमें, now you cannot change it. So that is not shift register. It is a register, but the data is stored in that register is permanent in nature. You cannot delete it, you cannot change it. Okay. But in those register where you can, allow such data transfer from one flip-flop to another, that is called shift register, and that's what is going to use. Now, how this data is getting transferred from one flip-flop to another flip-flop, that is very important to understand in any digital circuit, in our PLC also, and in any other circuit, that how this data transfer is done. So that is very, very important to understand. So there are 4 modes of operation based on this data movement. There are 4 modes of operation, how it is uh, decided. So first is called serial input, serial output data. Second is called serial input, parallel output data. Third is called parallel input, serial output data. And fourth is called parallel input, parallel output data. I guess this might have told you, I mean, you might have studied this in your digital electronics course. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, that's good. So now I'll brush up this so that those who have forget this, they should again revision should be done, because that is going to use. The first thing we are going to use study is serial input, serial output data. So suppose I have a 4-bit register, and these registers are connected in series. As you can see, we have used D flip-flop.
डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कोई बताएगा? What is the property of D flip flop? How the output and input are related? Sir, same output, same input. Sir, the input is in output. Hmm, Answer आपका सही है, but then use the When the correct. clock goes high, the input will appear on the output. No. Use the correct term. The correct term is the next stage of the output is same as its present state of the input. Yes, sir. That's the correct statement. Next state of the output is the present state of input. That is dn is equal to dn plus 1 or q n plus 1 is equal to dn. Okay. तो जो इनपुट पे देंगे आप डेटा वही उसका अगला स्टेज आउटपुट पे होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स इजी टू ऑपरेट, क्योंकि आपको पता है जो आउटपुट पे देना हो वो इनपुट पे दे दो, आउटपुट आ जाएगा। दूसरे में क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल दिस यू हैव टू सी। तो यहाँ पर ये 4 फ्लिप फ्लॉप सीरीज में कनेक्टेड है। अब इस पे हम कह रहे हैं सीरियल इनपुट। सीरियल इनपुट का मतलब ये है कि सारे फ्लिप फ्लॉप्स का जो इनपुट है वो सीरियली कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं है। दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरियल, इन सीरीज, राइट। तो देखिए आप इसका, आई मीन इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट इनपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट है, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट है, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट है, एंड दिस इज माय फाइनल आउटपुट, राइट। एंड ऑल these are clocked. Okay, all these are clocked. Okay. So what will happen? So is it a positive edge triggered or negative edge triggered? Anyone? Positive, yes, sir. Positive. Positive edge triggered because there is no bubble, as I mentioned No earlier. bubble. Yes. अगर ये सिग्नल इस तरीके से हो, यहाँ पर अगर क्लॉक आए तो ये होता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, और अगर इस तरीके से आए तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, कोई बबल नहीं है, तो दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि चेंज तभी होगा जब सिग्नल क्लॉक का 0 to 1 जाएगा, देन ओनली इट विल चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज। सो नाउ दीज आर कनेक्टेड। अब हम कह रहे हैं कि सीरियल इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट देखिए, हम इसको सीरियल आउटपुट क्यों कह रहे हैं। सो फर्स्ट स्टडी व्हाट इज रिटन, सो वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। सो लेट ऑल द फ्लिप फ्लॉप बी इनिशियली इन द रीसेट कंडीशन। हमने मान लिया कि जो फ्लिप फ्लॉप सारे जो इनिशियल है वो 0 पे हैं, Q3 Q2 Q1 Q0 ऑल इन 0। If an entry of a 4-bit binary, let's say हमें चारों पर मतलब 000 से 1111 करना है। अगर हमें 000 से 1111 करना पड़ेगा, सारे में हमको 11 करना है, मीन्स आई हैव टू इंटर द डेटा फ्रॉम 0000 to 1111, ठीक। सो दिस नंबर शुड बी अप्लाइड टू डी इन बिट विद द एलएसबी बिट अप्लाइड फर्स्ट। सबसे पहले एलएसबी क्या है इस पर D0 कौन सा है, FF0. द इनपुट सिग्नल इज इज डी इन जो कनेक्टेड है वो D3 पे कनेक्टेड है, ओके। द आउटपुट ऑफ दिस Q3 इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ D2। तो सबसे पहले हमें जो डेटा देना पड़ेगा, देखिए इनपुट पर जो डेटा है वो हमें कहाँ देना पड़ेगा कि जो एलएसबी बिट का मतलब क्या है, जैसे 0 1111 है, तो अब हमारे पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। इन चारों में एलएसबी कौन सा वाला है, ये वाला है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है। तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमें D3 पर देना पड़ेगा। यू आर राइट कि इस कॉम्बिनेशन में ये एलएसबी है, but then I am talking about the number which we want to enter into this register. Okay, if I want to input this register, then this is 1. So D2 D3 में ये 1 input दिया हमने। So what will happen
क्या ये एक ही बार में हम चारों डेटा को एक साथ इनपुट कर सकते हैं? नो, वी हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप। तो लेट अस सी इसका ऑपरेशन क्या है। सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि हमने D3 को 1 कर दिया। एनी क्लॉक सिग्नल टू Q3 Q2 ये 0 था। LSB बिट जो हमको एंटर करना उसका LSB बिट हमने D3 पे डाल दिया विच इज 1। फिर हमने क्लॉक अप्लाई किया ऑन द फर्स्ट falling edge of the clock. So let me say it negative trigger. Okay. I must to see that यहाँ पर देखिए एक बबल बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. This is a bubble made here. So this is a negative edge triggered flip flop. तो जब 1 से 0 पे आएगा तभी ये जाएगा. So let's say अब falling edge of the clock, the FF3 is set and is stored what in the register Q3, Q2, Q1. जब आपने यानी जब एक मरतबा ये गया तो व्हाट हैपेंस, ये आपने इनपुट दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, जो आपने यहाँ पर 1 दिया वो ये ना 1 आ गया और बाकी सारे 0 हैं. उसके बाद जब अगली क्लॉक पल्स आएगी, अप्लाई द नेक्स्ट बिग DN टू DN. उसके बाद जब आप अगली क्लॉक पल्स देंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो इनपुट है दैट विल बी शिफ्टेड टू आउटपुट, और यहाँ पर भी आपने 1 दिया है तो ये फिर दोबारा 1 आ गया यहाँ पर, राइट. तो एक बिट आपका शिफ्ट हो गया. कैसे शिफ्ट हो रहा है? सीरीज में, सीरीज में शिफ्ट हो रहा है, राइट. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी योर डेटा इन द रजिस्टर. अब दो फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर हो गया और 2 में 0 स्टोर है, राइट. नाउ नेक्स्ट में आपने क्या किया कि एक बार फिर जो थर्ड बिट है उसको फिर आपने D3 पे किया. फिर क्लॉक की अगली पहल जब आई फॉलिंग उसमें तो व्हाट विल हैपन, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. नाउ योर डेटा इज 1 1 1 0. नाउ अब जब आपने फिर इस पर चौथा बिट जो है वो आपने यहाँ पर लगाया और क्लॉक पल्स जैसी आपकी निगेटिव क्लॉक पल्स हुई, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल 1, दिस विल 1, दिस विल 1, दिस विल 1. अब आपके पास इनपुट पर देने के लिए कोई डेटा नहीं है, ना यहाँ पर कोई फीडबैक है कि ये वापस रोटेट कर रहा है. सो जो आपके पास 4 बिट डेटा था वो 4 बिट आपने 1 बाय 1 करके उस पर इनपुट किया सिंक्रोनाइजिंग विद द क्लॉक, और जैसे ही क्लॉक पॉजिटिव से निगेटिव आई फ्लिप फ्लॉप ने अपना स्टेटस चेंज कर दिया. चारों फ्लिप फ्लॉप में डेटा ट्रांसफर हो गया. आई मीन डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, राइट. So that is called serial flip flops. Serial input, serial output. Output पे क्या है? इस सीरीज में आउटपुट आया 0001, सॉरी 1000, 1100, 1110, 1111. Okay, so bit by bit ये शिफ्ट हो रहा है डेटा. So that is called serial input, serial output. यानी जैसे जैसे आपने बिट इनपुट पे इन किया वैसे वैसे आउटपुट पे बिट शिफ्ट होता गया, and that is called serial input serial output data. डेटा ट्रांसफर की जरूरत तो हर जगह पड़ती है. आप अभी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपको कहीं मेल से कुछ अटैच करके भेजना हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा. आप जो है वो हार्ड डिस्क पे अपने लैपटॉप से कोई चीज हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में ले रहे हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा, राइट. इवन विद इन योर लैपटॉप और पीसी और योर मोबाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग, you are transferring the data, right. So जो डेटा ट्रांसफर आप कर रहे हैं, दिस डेटा ट्रांसफर का मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is the first case of serial input and serial output data. Now to understand this we have the truth table. अब ये ट्रूथ टेबल से इसको इस तरीके से समझाया जाता है कि साहब ये क्लॉक देखिए ये आपने ये सब 00 पे था, ऑल वेर ऑन 00. फर्स्ट उसमें देखिए ये सारे के सारे 00 पे थे. जैसे ये निगेटिव क्लॉक पल्स यहाँ पे आई, डी इन 1 हुआ और आउटपुट इसका 1 हो गया. ओके, और व्हाट हैपेंस, यानी इसका ये जो 1 हुआ फिर आपने इसको इनपुट दिया, ये इसका इनपुट 1 हुआ. देन व्हाट हैपन, ये 0 0 0 यानी ये Q3
ये 1 हुआ, बाकी तीनों 0। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब आए तो ये इनपुट ये 1 हुआ, ये यहाँ पर आ गया, तो दिस गोज 1। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई तो आपके ये 3 1 हो गए, और चौथी क्लॉक पल्स में ये 4 1 हो गए, right? All 4 become 1. So that is how, that is called truth table. That how the data travels. Data travels serially, 1 in 1 out, 1 in 1 out. So that is how it is traveled. और अगर मान लीजिए कि आप इनपुट पे आप अगर 0 दें, यानी इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर सब में 1 1 1 1 डेटा स्टोर है और आपको 0 0 करना है, तो ऐसे ही 0 0 इन करना पड़ेगा, और 4 स्टेप में 4 साइकिल में वो डेटा सारा आपका 0 हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, आई मीन आइदर यू और कोई भी डेटा हो, आई मीन 1 1 0 1 हो, 1 0 0 1 हो, एनी 4 बिट डेटा जब आप शिफ्ट करेंगे इसमें जब एंटर करेंगे, तो द प्रोसीजर रिमेन सेम। दैट इज हाउ इट विल वर्क। Now after the truth table, the other formation of showing this operation is, this is called timing diagram. This is called timing diagram. ये स्टेटस 0000 है। इस वक्त तक हमें क्लॉक पर कोई हमसे मतलब नहीं है, क्लॉक पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे ही ये क्लॉक जैसे यहाँ पर है नेगेटिव 1 to 0, देखिए जैसे 1 to 0 आए तो ये Q3 जो सबसे आखिरी वाला था वो 1 हो गया। उसके बाद जब ये क्लॉक यहाँ पे आया तो आप देखिए यहाँ पर दूसरा बिट भी अप हो गया। जैसे तीसरा आया, ये तीसरा बिट भी अप हो गया, और जैसे ये चौथा आया, ये चौथा बिट भी अप हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऑल 4 आर 1, एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग यानी ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, और ये इसके करस्पॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डायग्राम। अच्छा, अब यहाँ देखिए इन बिटवीन हियर, लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, इज इट हैपनिंग समथिंग? आई मीन कहीं कुछ चेंज हो रहा है? कैन यू सी एनी चेंज? जो मैंने पर्पल लाइन से हाईलाइट किया है, कैन यू सी एनी चेंज हैपनिंग हियर? No. No, sir. No. The change will happen only when the clock pulse will go from 1 to 0, and that is important to understand. Okay, that is important to understand that when clock pulse will go from 1 to 0, then only the change will happen in the circuit. और अगर ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड होता तब ये 0 से 1 पे जाता, तब चेंज होता। अदरवाइज सर्किट में आप कुछ भी करते रहिए, आप इनपुट का आउटपुट का बिट चेंज करते रहिए, इनपुट बिट चेंज तभी होगा जब आपका एस ट्रिगर्ड में अगर पॉजिटिव सीक्वेंस पॉजिटिव ट्रिगर्ड है तो क्लॉक 0 to 1 जा रही हो, निगेटिव ट्रिगर्ड है तो क्लॉक 1 to 0 आ रही हो, उसी इंस्टेंट में सर्किट पे चेंज होगा। ये जो पर्पल लाइन हमने बनाया है, अगर इस दौरान आप इनपुट का बिट चेंज कर दीजिए, आप चेंज कर दिया, आउटपुट चेंज नहीं होगा। इस मोमेंट पर जब ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड में 1 to 0 जा रहा है, उस वक्त इनपुट का क्या स्टेटस है वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अदरवाइज इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, एंड दैट इज कॉल्ड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, कि आप अपने ऑपरेशन को क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करिए। ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि कितने टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मालूम है और क्लॉक का टाइम पीरियड मालूम है। तो एक क्लॉक साइकिल, अगर मान लीजिए कि यू आर ऑपरेटिंग एट 100 किलो हर्ट्ज, सो 100 किलो हर्ट्ज अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो एक इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 1/100 into 10⁻3, राइट? सो कितना हो गया ये? 0.1 माइक्रो सेकेंड, राइट? 100 किलो हर्ट्ज का टाइम पीरियड कितना होगा? 0.1 microsecond. हाँ 10 microsecond. 10 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो जो भी हो, तो माइक्रो सेकेंड में आपको टाइम पीरियड मालूम हो गया। अब आपको मालूम है कि यह ऑपरेशन
2 क्लॉक में हो जाएगा या 3 क्लॉक में हो जाएगा, तो फिर आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि कितने माइक्रोसेकंड के बाद हमारा आउटपुट 000 से 111 हो जाएगा. सो हाउ मेनी clock cycles it is taking? So here in this case it's taking 1 2 3 4. अगर एक का मान लीजिए आपने क्लॉक फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाला, एक का अगर 10 माइक्रोसेकंड है तो 4 क्लॉक पल्स पर 40 माइक्रोसेकंड हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि द टाइम विच विल बी टेकन बाय माय ऑपरेशन विल बी 40 माइक्रोसेकंड. ओके, सो उसी तरीके से जब आप कोई भी सीक्वेंस डिजाइन करते हैं, लेट्स से यू आर कंट्रोलिंग सम मोटर या लाइट या इन्वर्टर या कोई भी ऑपरेशन, यानी रोबोटिक्स, वट एवर ऑपरेशन यू आर कंट्रोलिंग, सो एज अ डिजाइनर यू शुड नो कि कितने टाइम के बाद हमारा ऑपरेशन होगा. ओके, सो वो टाइमिंग आप कहाँ से निकालेंगे? यहीं से निकलती है टाइमिंग. वो जो आप एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होने में कितना क्लॉक लेगा, वो टाइमिंग डायग्राम से निकलता है. फिर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर आप टाइम निकाल लीजिए, और टाइम निकालने के बाद देन यू कैन से दैट यस हमारे इस इनपुट से आउटपुट आने में इतना ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन में इतना टाइम लग रहा है. सो टोटल हमारा जो आउटपुट मिल जाएगा वो इतना माइक्रो सेकेंड में या इतने मिली सेकेंड में. तो अकॉर्डिंगली योर डिजाइन विल बी रियलिस्टिक. अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कुछ का कुछ प्लान कर देंगे, आपने कैलकुलेट किया नहीं और आपने उसमें दूसरा ऑपरेशन लगा दिया, वो इसका आउटपुट वहां पहुंचा नहीं, वहां कुछ और हो गया, तो सिस्टम विल कोलैप्स. ओके, एंड दैट इज व्हाई designers are especially highly paid because of these skills, कि उनको ये सारी एक्यूरेसी मालूम होती है. एक लेआउट, एक लेमैन जो एंड यूजर है, जो मार्केट से खरीदता है, उसको नहीं मालूम कि इसके अंदर का क्या तिया पाचा है. बट एज एन इंजीनियर यू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड यू शुड नो दैट. ठीक है जी. सो आई एम स्टॉपिंग हियर. एनी डाउट टू एनीवन? यू आर वेलकम टू आस्क. किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर No, में? sir. Okay. No, sir. So those who have joined late, just wanted to again inform that the sessional test will be conducted as per schedule on 4th of March, and the syllabus for sessional test is Unit 1 and Unit 2. Okay, so let us start. हमारे था